Okay, so I'm trying to complete this demand and recovery chapter. Like it has 22 questions in 30 minutes. Let's see if I can. Actually मैंने पहले read कर लिया है, go through एक बार questions को नहीं, मतलब इसके concepts, book से concepts को. तो अब एक बार अतुल अग्रवाल के question bank से I'm doing questions. ये मेरी 25 का question bank है. So question number 1. Time limit for issue of show cause notice under section 73 and 74. 73 है bona fide cases, 74 है non bona fide cases like fraud, willful misstatement and suppression of facts का case. और 73 में 3 months prior to issue of order, और इसमें 6 months prior to issue of order को I think final order or something बोलते हैं, ठीक है. और order the due date to file to issue the order is 3 years from the due date of filing of annual return for the period for which the amount is due, and in case of refund from the date of erroneous refund, and in opposite case it is 5 years from the due date of filing of annual return of the period for which amount is due, or erroneous refund, date on which an erroneous refund is made. Now let's see provisions relating to relevant date. Time limit they are asking, and relevant date and लिखा है, okay. Relevant date is okay. हम लिखे time limit for issue of show cause notice. Section 73 के केस में cases other than fraud, willful misstatement, or suppression of facts, that is bona fide cases. For cases other than the time limit for SCN is 2 years and 9 months from due date of filing of annual return for financial year to which demand pertains, or from date of erroneous refund. Section 74 non-bona fide cases. The time limit is 4 years and 6 months. डायरेक्टली शो कॉज नोटिस का दे दिया है, नॉट विद रेफरेंस टू ऑर्डर. तो यहाँ पर 6 months from due date of filing of annual return for the financial year to which demand pertains, or from date of erroneous refund.
Question number 2. Time limit prescribed for adjudication. Adjudication means adjudication order of the cases under section 73 and 74. Is there a time limit? Yes, there is a time limit. Discuss the same. Time limit for adjudication order. Number 1. Section 73 में 3 years from due date of filing of annual return for the financial year to which demand pertains, or from date for the financial year due to the filing of annual returns, or from date of erroneous refund. And number 2, section 73, 5 years from due date, same thing, due date of filing annual return for financial year to which demand pertains, or from date of erroneous refund. यहाँ पर भी ये लिखा है, the time limit for adjudication of cases 3 years from due date of filing of annual return. Demand pertains to cases. यहाँ पर रिफंड का मेंशन क्यों नहीं किया है यहाँ पर? For adjudication of cases, closure, time limit, adjudication. The time limit for adjudication of cases is 3 years from the due date of filing of annual return for the financial year to which demand relates to. सिर्फ यहीं तक लिखा है, demand pertains तक, ये नहीं लिखा है यहाँ पर. Why? Maybe adjudication वर्ड लिखा है इसलिए disputed matter या उसके लिए होता है ना, तो रिफंड वाला केस में नहीं आता होगा मुझे. रिफंड के लिए आना तो चाहिए था. 3 months prior due date, 3 years from the due date of annual return for which dues relate to, or 3 years from date of erroneous refund. यहाँ पर तो है prior to the time limit to pass order. I don't know. No idea. Question number 3. एग्जाम में वैसे ऐसा कुछ आएगा ही नहीं इस तरह का क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड आता है, बट स्टिल ठीक है. Enlist the circumstances, show cause notice can be issued by the PO under section 73 bona fide cases. Specify the time limit for issuance of such show cause notice, as also a time period for issuance of order by the proper officer under section 63. Issuance of show cause notice as also the time period. आई थिंक इसमें हम उससे लिंक करते हैं, शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड लिंक करते हुए ऑर्डर से फिर बताना होगा, लाइक 2 years 3 months, 2 years 9 months ना लिखकर 3 months प्रायर टू इशू ऑफ ऑर्डर. और circumstances फॉर सेक्शन 73 शो कॉज नोटिस, आई थिंक ये दोनों का ही है circumstances, तो ठीक है. As per show cause notice can be issued by proper officer if it appears to him tax not paid, short paid, not paid, short paid, or erroneously refunded, मतलब गलत रिफंड कर दिया है, refunded, or ITC has been wrongly availed or utilized. ITC has been wrongly availed or utilized. Not paid, short paid, erroneously refunded,
रॉन्गली अवेल्ड। अब वहाँ पर अब पिछला हमने अरेस्ट वाले केस में 4 केसेस पढ़े थे। फर्स्ट वाज इनवॉइस विदाउट सप्लाई और सप्लाई विदाउट इनवॉइस, एंड थर्ड वाज ITC विदाउट एनी प्रूफ ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और एक और था ITC विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज एंड ITC हो गया, सप्लाई हो गया, आई थिंक कुछ टैक्स रिलेटेड था मे बी। अरेस्ट without invoice, without supply, tax collected but not paid to government beyond a period of 3 months. Amount collected as tax but not paid to the government. और यहाँ पर 4 केसेस है फॉर issuance of show cause notice में tax not paid, show cause notice। अगर टैक्स नहीं पे किया है, शॉर्ट पे किया है, या फिर ITC रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है, या फिर एरनियसली रिफंड मिल गया है। डिमांड करना है ना यहाँ पर, क्योंकि मनी डिमांड करना है। ओके, पे ही नहीं किया, वो वाले सारे पे वाले केसेस हो गए आई गेस। इसमें था हाँ मतलब कि फ्रॉड रिलेटेड ही है वैसे तो सब चीज़ें। ITC वहाँ पर भी है, वो भी है, बट स्टिल यहाँ के अलग है। नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरनियसली रिफंडेड, ITC रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। ओके, अब उसके बाद शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड तो वही है 3 years फ्रॉम ड्यू डेट, ऑर्डर का है 3 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग फ्रॉम फॉर फाइनेंशियल ईयर फॉर विच डिमांड pertains, और फ्रॉम erroneous refund। और ये प्रायर टू 3 months फ्रॉम इशू ऑफ ऑर्डर, एंड ऑर्डर का ये रहा नंबर 1, नंबर 2, 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज देन फॉर एनी रीजन अदर देन, ये भी लिखना है यहाँ पर। ओके, अच्छा ये चारों अगर फ्रॉड वाले होते वो सब होते तो वो सेक्शन 74 में चले जाते। तो ये है यहाँ पर एनी रीजन अदर देन फॉर बोनाफाइड केसेस। ठीक है, नोटिस शुड बी इशूड। अब यहाँ पे शो कॉज नोटिस पे आ गया प्रायर टू द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर पासिंग ऑर्डर जिसके अंदर डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड एनी पेनल्टी पेएबल बाय डिफॉल्टर लिखा है ऑर्डर के। ठीक है, ऑर्डर की अपडेट लिख दी है टू बी पास विद इन 3 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। और टाइम लिमिट ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, अच्छा 10 करके लिख दिया है, 10 2 year and 9 months फ्रॉम एनुअल रिटर्न ड्यू डेट। ठीक है, और फिर उन्होंने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न भी लिख दिया है जो कि है 31st day of December following end of such financial year। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, डिस्कस procedures for issue of adjudication under section 74(9) and 11 and the time limit for passing adjudication order under section 10। अब ये टाइम लिमिट्स का, ये सेक्शंस का केस नहीं पता है। 749 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पे 50% विद इन 30 days ऑफ ऑर्डर एंड ऑल शो कॉज नोटिस प्रोसीडिंग्स कंक्लूड। ओके, 7410 टाइम लिमिट फॉर पासिंग एजुडिकेशन ऑर्डर के लिए तो 5 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। ठीक है, प्रोसीजर यहाँ पे देख लेते हैं फॉर इशू ऑफ एजुडिकेशन ऑर्डर। प्रोसीजर क्या है प्लीज वो देख लेते हैं। प्रोसीजर इज where show cause notice or statement is issued to a person chargeable to tax, he may furnish representation to proper officer
Okay, where show cause notice is issued and he can representation to proper officer. He is of the view that he is not liable to pay the whole or part amount mentioned in the show cause notice. The proper officer, after considering representation, pass an order determining the amount of tax, interest and penalty due from such person. 749. If where any person served with adjudication order, okay, adjudication order under section 749 and 11. Okay. Considering representation 749, where any person served with an adjudication order pays tax along with interest payable thereon and a penalty equivalent to 50% within 30 days of communication of order, all proceedings of said notice concluded. Okay, time limit issuance is 5 years. Okay. Under section 74. Procedure. The show cause notice issued or statement for extra demand. Okay. Where show cause notice or statement issued to a person chargeable to tax, he may furnish representation to proper officer in his defense if he is of view that he is not liable to pay whole or part of amount mentioned in show cause notice. तो यहाँ पर अपन show cause notice आ गया है, अभी ऑर्डर इशू होगा, ऑर्डर इशू होने से पहले की बातें हो रही हैं सारी. प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ एडजुडिकेशन. ओके, मतलब ऑर्डर इशू होने का प्रोसीजर क्या है. तो सबसे पहले शो कॉज नोटिस जो इशू हुआ उसके बेसिस पे फर्निश कर सकता है रिप्रेजेंटेशन इन हिज डिफेंस एंड फिर प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर कंसिडरिंग representation pass an order determining tax, interest and penalty due. ठीक है. और फिर थर्ड, where any person served with adjudication order pays tax plus interest and 50% of penalty equivalent to 50% of such tax within 30 days of communication of order, all proceedings of show cause notice deemed to be concluded. ये है अपना सेक्शन 74(11). ओके. एंड 74(9) है अपना प्रॉपर ऑफिसर जब पास एन ऑर्डर करता है आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन, वो 74(9) है. 74(11) प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ एडजुडिकेशन ऑर्डर एंड 11 में आपकी सारी प्रोसीडिंग्स कैंसिल हो जाएंगी. एंड 74(10) में 74(10) में टाइम लिमिट है. Section is 5 years from due date of annual return. ठीक है. इस केस में considering representation pass an order pays tax and interest penalty 50%
within 30 days of communication of order concluded. ठीक है, अब यहाँ पर 15% होता है हमारा अगर वो पर्सन within 30 days of शोकॉज नोटिस दे देता है तो, और 25% होता है, अच्छा बिफोर शोकॉज नोटिस अगर दे देता है तो 15%, एंड आफ्टर 30 days ऑफ within 30 days of शोकॉज नोटिस देता है तो 25%, एंड within 30 days of ऑर्डर देता है तो 50%, एंड अदरवाइज 100%. 15, 25, 50 and 100. 15 is before show cause notice and 25 within 30 days of show cause notice and within 30 days of order, तो हो जाएगा 50% ऑफ सच टैक्स. ठीक है, और अब है क्वेश्चन नंबर 5. एवरेस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन इशूड अ शो कॉज नोटिस ऑन 31 जनवरी 2024 73 में. ओके, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1720 and 20. एवरेस्ट कंटेंट्स दैट इज टाइम बाउंड. एग्जामिन. ओके, सबसे पहले प्रोविजन अगर अपन लिखते हैं तो प्रोविजन शो कॉज नोटिस 2 years and 9 months होता है अंडर सेक्शन 73 फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न. तो इस केस में एनुअल रिटर्न आ रही है 31st ऑन शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स. शो कॉज नोटिस इशू बाय इस डेट को, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2021 है तो दिसंबर 2021 है. तो गिवन केस में गिवन केस लिख दिया मान लो, एंड देन एनालिसिस 31st December 2021 is annual return due date, और show cause notice to be issued before. यहाँ पर 2 years and 9 months लेना है. 2 years हो गया 31st December से लेकर के 23 31st December 2023, एंड फिर 9 months मतलब कि 30th September 2023 तक. So yes, it is time bound. Conclusion, yes, time bound. Okay, before this and but issued after this. ठीक है, यहाँ पे टाइम वगैरह मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर देंगे. ठीक है, एटलीस्ट 3 months prior to show cause notice. Contention is not valid in law. ऐसा क्यों? At least 3 months prior to the time that was issuance of show cause notice, issuance of order has to be issued within 3 years from the due date of filing annual return. The due date for furnishing is 31st December. 2 years and 9 months. अच्छा, इसमें भी उन्होंने पहले 3 months वाला बात लिखा है, फिर 3 years वाला बात लिखा है, फिर 10 वाला बात लिखा है. 3 points में इसको डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर. ओके, डेट ऑफ फर्निशिंग इज 31st December 2021, अपना भी यही है, एंड 3 years लैप्सेस. अच्छा, 21 से 22 एक ईयर, 22 से 23 दूसरा, तो सितंबर 2024 है, तो नो टाइम बार. सितंबर 2024 है ना, अब इन्होंने जनवरी 2024 में कर दिया तो नहीं हुआ है. नॉट टाइम बार. रीड इट प्रॉपर्ली एंड डू इट प्रॉपर्ली. यार क्या सीन है. कैलकुलेट years properly. Okay. Question 6. Rajul show cause notice 31st December 23. Short payment between, okay, इसके लिए 31st December 2020 होगा इसका annual return का डेट. Opportunity of being heard on 15 January 2024. What should be the written submissions in the reply to the show cause notice? Written submissions, show cause notice. तो बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन लग रहा है, बट ठीक है, मे बी रिटर्न सबमिशंस. ओके, मे बी टाइम बाउंड. ओके, 31st December है ना, तो 31st December 2020 होगा. 31st December 2020 एंड 2021 22 September 23. हाँ, टाइम बाउंड है. ओके,
शो कॉज नोटिस इज टाइम बार, तो ये यहाँ पर सबमिशंस हो गया. दिस विल गो इन आवर रेफर. सबमिशन हो गया. मे बी ये पहले एनालिसिस में लिख सकते हैं. रिटर्न सबमिशन. शो कॉज नोटिस इज टाइम बार. Issued for normal period of limitation is not sustainable. Show cause notice can be issued. Okay. यहाँ पर ये पूरा explanation है. Okay, यहाँ पर explanation and calculation इधर है. फिर 3 years वगैरह, और फिर यहाँ पर time period, due date of furnishing और show cause notice का यहाँ पर provision लिखते हैं. Provision, furnishing and calculation in given case. You know. Okay. And number 4 is conclusion. Notice has been issued after 30th September. Entire proceeding is barred by limitation and deemed to be concluded. Time barred and deemed to be concluded. Issued for normal period of limitation. I don't know first part का क्या मतलब है. I think ये conclusion ही एक तरीके से, और type of conclusion होंगे. ठीक है. I guess half hour तो हो चुका है, but मेरे questions अभी बचे हैं. Let's see, अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. A person is chargeable with tax in case of fraud. He decides to pay the amount of demand along with interest before issue of notice. Is there any immunity under section 74? हाँ, so 15% का option to pay. 50% नहीं, 15% of penalty plus interest plus tax. Yes, option A. Option to pay amount of tax and penalty equal to 15%, and on such payment no notice shall be issued with respect to the either on his own or ascertained by the proper officer. 15% of tax involved as penalty. Okay, उसके बाद यहाँ पर है on such payment no notice shall be issued any further. No notice. Okay, question number 8. Registered under GST had made short payment of GST for the month of July 24 or July something. He does not want a show cause notice to be served by him under section 74. Short payment of tax is on account of reasons other than fraud, मतलब bona fide. That means ये हो गया 73, 74. He does not want a show cause notice ना, तो फिर फर्स्ट केस में तो pay interest and tax he does not want a show cause notice to be served on him. Tax before issue of show cause notice, और second में pay interest and tax plus penalty of 15% of such tax. Penalty I think सिर्फ tax के अमाउंट पर है, not interest. Okay, आंसर देख लेते हैं. The show cause notice shall not be issued if Mr. Okay, पूरा proper frame करना पड़ेगा. As per short payment of tax on account of reasons of fraud other than fraud, as per section 73, show cause notice will not be issued by proper officer if Mr. X pays amount of amount of tax short paid along with interest payable on ascertainment of such tax or tax ascertained by PO before the service of notice and inform PO in writing of payment.
of such payment. A short payment, tax short paid along with interest and a penalty equal to 50% of such tax before the service of notice. Before service of notice and inform proper officer. Question number 9. Mr. Jagjeevan has filed form GSTR 3B after the due date. Okay, delayed filing of ITR का मतलब ये नहीं होता है कि एक शॉर्ट पेड वगैरह उसके ऊपर 73-74 नहीं लगता है. एक ऐसे था. Adjudicating authority is of opinion that penalty has to be levied 73(9) and 11. 73(9) and 11. Actually 74(9) and 11 था ना क्वेश्चन में. हाँ ये तो 74(9) and 11 है, बट 73(9) और 11 भी आई थिंक सिमिलर होगा कि 9 में अपना होगा प्रॉपर ऑफिस आफ्टर प्रेजेंटेशन इशू करेगा ऑर्डर, और 11 में कंक्लूड हो जाएगा. ओके. And has decided to pass an order for levying penalty of 10% of tax or 10,000, whichever is higher, on the grounds that amount collected as tax has not been paid within a period of 30 days from due date of payment of tax. यहाँ पर collected as tax has not been paid within 30 days. ये वाला पॉइंट तो 73 में पढ़ा नहीं था, बट ठीक है. Discuss decision of authority. Okay. Discuss law of limitation period for issuing of show cause notice and passing the adjudication order. तो limitation of period तो यही है कि before prior to 3 months of issuing of adjudication order, and adjudication order is to be issued within 3 years from due date of annual return filing for demand or from date of erroneous refund. Okay. So thus show cause notice का limitation हो गया 2 years and 9 months from due date of filing of annual return. और ऊपर वाले केस में decision of adjudication authority as to correctness. तो adjudicating authority बोल रही है 10% penalty और 10,000 का, whichever is higher, because collected tax had not been paid. ये 73-74 का केस तो नहीं है. 73-74 होता है erroneous refund, ITC wrongly availed होता है. ITC wrongly availed and utilized होता है, और रिफंड होता है, और टैक्स शॉर्ट पेड और टैक्स नॉट पेड भी होता है शायद से ना. टैक्स नॉट पेड और टैक्स शॉर्ट पेड दोनों होता है. हाँ नॉट पेड भी आता है, तो नॉट पेड वाला आ गया. करेक्टेड एज टैक्स एज नॉट पेड. डिसीजन ऑफ एजुकेशन अथॉरिटी इज नॉट करेक्ट लिखा है. नॉट करेक्ट बिकॉज फॉर्म ओके GSTR 3B की बारी है ना, इसलिए नॉट करेक्ट है. Provisions 11 can be invoked only when the provisions of 73 are invoked, and provisions of section 73 are generally not invoked in case of delayed filing of return in GSTR 3B. Provisions of section 73 are generally not invoked in case of delayed filing of return in form GSTR 3B. Okay, because अच्छा GSTR 3B was filed तो नहीं क्या, because tax along with applicable interest has already been paid. अच्छा उसने फाइल कर दिया, उसके बाद वो पेनल्टी की बात कर रहा है. ओके. GSTR 3B फाइल कर दिया तो फिर पे हो ही गया होगा टैक्स वगैरह, बिकॉज टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑलरेडी बीन पेड. Penalty is not payable although a general penalty may be imposed. No penalty, but general penalty of 25,000 का शायद से general 8 or 25,000 penalty may be imposed since tax has been paid
late in contravention of provisions of CGST Act may be imposed at 25,000. Amount of general penalty. um, mm, mm. I think previous chapter में था. Search and seizure and arrest. Assessment and audit में general penalty. I don't know किसमें general penalty. वहाँ पे इसमें चाहिए तो. General. Hence, only general penalty of up to rupees 25,000 can be levied for delayed filing. Rupees 25,000. Okay. और फिर नीचे यहाँ पर टाइम लिमिट फॉर शो कॉज नोटिस इज 2 years 9 months and passing adjudication order is within 3 years. Okay. Question number 10. Anant and Company self-assessed tax liability 90,000 for the month April but failed to make the payment. Okay, payment नहीं किया. Subsequently, the department initiated pay नहीं किया, not paid short. ठीक है. Initiated penal proceedings against Aetna, recovery of penalty 73. Issued show cause notice 10th August, which was received by Anant on 14th August. Communication of show cause notice. Okay, this question is important. Like इसके अंदर amount received अलग डेट है और शो कॉज नोटिस इशू की डेट अलग है. इशू की डेट देखते हैं ना, स्टेट तक इशू होना चाहिए. ठीक है. डिपॉजिटेड अप्रैल के लिए इसका 31 दिसंबर हो जाएगा. Anand and Company deposited the tax along with interest on 25th August and informed the department same day is containing a liable to pay a penalty of 45,000, 50%. शो कॉज नोटिस 10th अगस्त को इशू हुआ है. सेक्शन 73 में तो आफ्टर विदिन 30 days ऑफ शो कॉज नोटिस पे चलता है ना. नोटिस ऑन 10th अगस्त, तो यहाँ पर नहीं, करेक्टनेस नहीं है, यहाँ पर रॉन्ग है. एज पर फॉर पेमेंट इज अप्रैल का 20th May. 3. Self-assessed tax is not paid within 30 days from due date of payment of tax. Paid tax within 30 days of not available. Oh अच्छा, यहाँ पे सेल्फ असेस्ड का केस है ना. वो गॉड, सेल्फ असेस्ड में होता है कि अपने खुद से ही कैलकुलेट किया तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आप विदिन 30 days में शो कॉज नोटिस के दे सकते थे. आपको पहले ही देना पड़ेगा. ड्यू डेट के अंदर ही पे करो. ओके, वेयर सेल्फ असेस्ड टैक्स इज नॉट पेड विदिन 30 days, तो इसके अंदर हैज नॉट पेड सेल्फ असेस्ड टैक्स विदिन 30 days ऑफ ड्यू डेट. मई था, इसने अगस्त में पे किया है. पेनाल्टी 10% और 10,000, whichever is higher. Penalty is 10,000. Stand taken by the department is correct, but the amount of penalty is 45,000 is incorrect. But is correct, but amount of penalty is partial correct एक तरीके से. Question 10. Examine correctness of stand taken. हाँ, यहाँ पर अपने पास है ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल के लिए. फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इज 20th May फॉर अप्रैल. फिर एज पर सेक्शन 73
where self-assessed tax is not paid within 30 days from due date of payment, penalty equivalent to 10% of tax or rupees 10,000, whichever is higher, is payable. There's no option to pay within 30 days of show cause notice to avoid penalty is available in case of self-assessment. सिर्फ और सिर्फ डिमांड के केस में होता है, नॉट इन केस ऑफ सेल्फ असेसमेंट. ठीक है. Therefore, tax paid after 30 days of due date of payment penalty higher of 10% of tax, so 10% of tax or 10,000, that is 90,000 into my 10%, that is 10,000 rupees. Hence, department is partially correct. Question 11. बहुत सारे questions बचे हैं, already 1 hour होने वाला है. Check or not has self-assessed 80,000 fees to pay within 30 days. Okay, नहीं पे किया है, तो इसका मतलब 10% of tax और 10,000, whichever is higher, किसको penalty देनी पड़ेगी. Tax है 80,000, 8,000 और 10,000. Determine interest and penalty payable by him, explaining the provisions. Penalty तो ये हो गई penalty, और with particulars available. Collection of tax, date of payment of tax. Show cause notice has been issued to him where he intends to establish his liability even before that no penalty is required. ये तो penalty हो गई. अब interest यहाँ पर आ जाएगा. Think tax not paid है ना, तो फिर after due date, first day of due date ना, तो मतलब फिर है 30 days from due date. यहाँ पर tax collection, date of payment. You used to pay the tax within 30 days. Remember such tax. Collection 18 सितंबर को हुआ है, तो कहाँ से इंटरेस्ट लगेगा. ओके, यहाँ पर ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड ऑन 18 सितंबर इज 20th अक्टूबर. जब कलेक्ट किया तब से 20th अक्टूबर, तो फिर 21st अक्टूबर से लेकर के 26 नवंबर तक का इंटरेस्ट इंटू 18% इंटू अमाउंट इज 80,000. 21st October से we have 31 minus 10 days plus October, so this 36 days. Okay, 37 days. 21st, 23, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 11. Okay, 37 divided by 365 into 80,000 into 18%. 80,000 into 18% into divided by 365, that is 1459.72. ठीक है. अब यहाँ पर लिख देंगे पेनल्टी के लिए रीजन फॉर सेल्फ असेस टैक्स. नो ऑप्शन अवेलेबल इन केस ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स
Then enter your option to pay such tax before issuance of so-called notice, to avoid penalty. यहाँ पर where self-assessed tax and any amount collected as tax is not paid within 30 days from due date of payment of tax, then option to pay such tax before issuance of so-called notice to avoid penalty is not available. यहाँ पर ये भी लिखना है क्योंकि यहाँ पर बिफोर शो कॉज नोटिस का केस आ रहा है, to avoid penalty is not available. Higher, the penalty of 10,000 will have to be paid. Such penalty is payable when the PU issues an order in this behalf. Okay. आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिया, बट पेनल्टी इज टू बी पेड when PU issues order. Penalty is to be paid when proper officer issues an order in this behalf. Question 12. Inoba Bhave engaged in supply of taxable services. He supplies some services in the month of April and collects GST of 50,000. April ka onset supply on 18th April, April to 20th of May. He fails to pay, so collected within 30 days of due date of payment of such tax. No show cause notice, discharge liability before show cause notice. No liability, therefore self-assessed. Says his tax liability 50,000 the same on 26 June. 26 जून को पे कर दिया इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. तो इंटरेस्ट तो लग जाएगा 21 मई से 26 जून तक 18% into 15,50,000. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9, 10, 11 days. 26, 37 days का ये 365. Divided by 365 into 15,50,000 to 18% is equals to 28282. Interest आ गया. Interest at that 18% from due date of payment of from next day ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू टैक्स. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है कि सेल्फ असेस्ड, सिंस सेल्फ असेस्ड नो ऑप्शन टू अवॉइड पेनल्टी बिफोर शो कॉज नोटिस और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स इज नॉट डिपॉजिटेड. सेल्फ असेस्ड टैक्स हो या फिर any amount collected as tax is not paid within 30 days from due date of payment of taxes. ये दो केसेस हैं. ओके. पेनल्टी लग जाएगी 10% ऑफ टैक्स और 10,000 हायर. सो टैक्स होता है 15,50,000 है ना, 15,55,000. ये पेनल्टी का अमाउंट हो गया whichever is higher. Question 13. Discuss amount of tax and penalty to be paid, if any, in the following independent cases. Tax and penalty to be paid. यहाँ पर date on which credit was wrongly taken. Amount of ITC wrongly taken is 200 lakhs. This date को लिया. ठीक है. Adjudication order passed on 26th July 24 demanding the entire amount. 31st January का होता है 31st December 2022, 31st December 2023, 31st December 2024. ओके. यहाँ पे ऑर्डर टू टाइम के पास हो गया. इक्वल एंड इम्पोजिंग 74 है. ओके. 26 जुलाई डिमांडिंग द एंटायर अमाउंट ऑफ क्रेडिट विद इंटरेस्ट एंड इम्पोजिंग अमाउंट इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट एज पेनल्टी. नो पेनल्टी यहाँ पर होगा, यहाँ पर 6 जुलाई को ना एजुडिकेशन ऑर्डर हो गया है. एजुडिकेशन ऑर्डर पास के 30 डेज में 30 डेज of order, then 50%, else 100%. First render demanding the entire amount of credit with interest and imposing amount equivalent to the credit as penalty. ठीक है. अब यहाँ पर 30 जून 2022 को ITC है. जून 2022, अप्रैल, मई, मार्च और दिसंबर 2023 है. यहाँ पर
दिसंबर 2023 है आपका एनुअल रिटर्न का, और ठीक है ऑर्डर पास्ट अमाउंट ऑफ क्रेडिट इम्पोजिंग अमाउंट इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट पेनल्टी। इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ पे पे कब किया है वो तो लिखा ही नहीं है। नॉल केसेस, अच्छा वांट्स टू पे द अमाउंट ऑन 20th सितंबर, ओके इस केस में तो नहीं, therefore 100% here 20th September 2024 paid on, ठीक है इस केस में 20th सितंबर ना, अगस्त सितंबर, यहाँ 50% बिकॉज विद इन 30 days। 22 का ना सेम आएगा जो कि है दिसंबर 2023, 5th September 25 डिमांडिंग एंटायर अमाउंट नहीं, यहाँ पर 50% आ जाएगा। जनवरी 2023 का दिसंबर 23 तक होना चाहिए, दिसंबर 23 एनुअल रिटर्न है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर वेयर ही एडमिटेड नॉन रिसिप्ट ऑफ द इनपुट्स एंड अवेलिंग द क्रेडिट, शो कॉज नोटिस अभी तक इशू नहीं हुआ है, और 28 सितंबर को पे किया है। 24 स्टेटमेंट 6 सितंबर को इशू हुआ है, और शो कॉज नोटिस अभी तक आया नहीं है, तो ये वाला केस कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है 6 सितंबर को, क्या होता है जैसे रॉन्गली ऑयल किया है जिस पीरियड का वहाँ से होता है, ठीक है। दिसंबर 23 डेट आई है, तो 20th सितंबर 24 को अगर कर देता है तो इफ बिफोर शो कॉज नोटिस, और शो कॉज नोटिस का होता है 2 year 9 month फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ओके, यहाँ पर एजुकेशन ऑर्डर 26 जुलाई and 20th September after 30 days of communication of education order. Entire amount of ITC wrongly availed is 200 lakh. Penalty equivalent 100% penalty. Adjudication order is passed on 26 August within 30 days of the communication of adjudication order. Therefore, entire amount of ITC wrongly availed. अच्छा, इधर यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसमें रिसीव्ड उसका था इशू, यहाँ पर इसको तो बात ही नहीं है 10 अगस्त का था ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पर शो कॉज नोटिस का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। और फिर रिसिप्ट ऑफ इनपुट्स एंड अवेलिंग द क्रेडिट रॉन्गली, ओके। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 3 है अपना 5 सितंबर को, यहाँ पर 50%। September entire amount of ITC wrongly availed is 120 lakh and 25%, 25% तो क्या है यहाँ पे थर्ड में 422। शो कॉज नोटिस है अपना 5 सितंबर 2024। अच्छा, ये शो कॉज नोटिस है, शो कॉज नोटिस से 30 डेज के अंदर दे दिया ना, तो फिर 25% credit as order 50% कर दिया था, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में पेमेंट में 20 सितंबर बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस, क्योंकि अभी शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ, देयरफॉर अमाउंट ऑफ ITC एडमिटेड इज 50 lakh, पेनल्टी इक्विवेलेंट टू 15%, ओके। और शो कॉज नोटिस नॉट बीन इशूड येट, is communicated the same day when it is passed, communicated वाला same day when it is passed। Question 14, taxpayer suppressed certain facts resulting in short payment of tax, suppress किया 74, mistake is pointed out but no show cause notice 12 lakh, he agrees has taken place January 23,
He clears the dues on April 23. Department on verification advice. Additional separation of 2 lakh in the same month of January 23. Show cause notice is issued and taxpayer represents for PO, which results into an adverse order against taxpayer. Okay. The order is passed on 25 May 23, complies with the adverse adjudication order. Adverse adjudication order. अच्छा यहाँ पे शो कॉज नोटिस है is issued and taxpayer represents before, which results into an adverse order. Lies with the adverse adjudication order on. Comply कर दिया यहाँ पर. Order 25 मई को आया within 30 days. 25 जून तक होना चाहिए था. अगर हो जाता तो 50% ऑफ पेनल्टी हो जाती. At each stage, तो फर्स्ट तो for 12 लाख हो जाएगा. Penalty at the rate 15% because show cause notice not issued. और इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 12 लाख इंटू 18% इंटू 21st Feb to 20 April. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 8 days. Feb, March, April. 59 days. 365 days. But 365 into 12 lakh into 18%. That is 34915. Take and trust. Or tax 12 lakh का tax payable. But for additional 2 lakh. In the same month of January, so called notice issued. The order is passed on it now. 100%. That is कितना है अपना 2 lakh because after 30 days of order, interest is equals to addition in the same month of January 23. Okay, यहाँ पर भी 21 Feb से लेकर के 26 June 23 तक 5 into 18% into 2 lakh. 8 days Feb, March, April, May, June. No, June के we have 26 days. 126 divided by 365 into 2 lakh into 18% divided by 365 is 12427. इस केस में हो गया और टैक्स आ जाएगा 2 लाख का. नाउ इसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखा है. सबसे पहले तो हाँ एक्सप्लेन कर दो कि सेक्शन 74 है ये. इट इज अ केस सेक्शन 74 नॉन बोनाफाइड बिकॉज सो जो भी रीजन है बिकॉज ऑफ suppressed an activity has taken place in the month of January. The same has to be reported in return statement or report filed in the month of February. Interest would become payable from 21st Feb. Tax interest before the issue of show cause notice. In case of short payment of tax by reason of suppression of facts, if the taxpayer pays such short paid tax and interest before show cause notice, then 15%. Tax applicable to tax after adjudication order. Before show cause notice, after adjudication order, after 30 days of communication. पेनल्टी तो 100% है. यहाँ पर अमाउंट था 34915. मेरा भी है. इंटरेस्ट का अमाउंट है 12526. मेरे 126 डेज आए, इनके 127 आए हैं. इसे कैसे? मेरे 122, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
ईयर गिवन है क्या? मे बी ये वो ना लीप ईयर हो सकता है। तो ये यहाँ पर 21, 22, यहाँ पर 27 जून तक क्यों आया? 26 जून तक इसने कर दिया था। वो क्वेश्चन कितना बेकार तरीका है, क्वेश्चन ही सही नहीं देखा। यहाँ पर तो 27 डेज लिखा है, मैंने इसको 26 डेज ले रही हूँ। 27 डेज से भी सही आ जाएगा मेरा, ठीक है। 12526 526 और पेनाल्टी 2 लाख और टैक्स पेबल इज 2 लाख। क्वेश्चन 15। और अभी 5 मिनट्स में जल्दी से कंप्लीट करने का ट्राई करना पड़ेगा। On 5th July, Shukal noticed 5 lakh demanding short payment of tax 4,50,000 for the month of January. Also interest of ₹50,000. Raised objection after personal hearing on 30 August. Adjudication order passed the final order of 3,50,000 without any reference with regard to payment of interest. Interest to pay hota hi hai. Deposit 3,50,000 and informed the same day. Subsequently, interest 60,000 of 3,50,000 is not ready to pay interest. That is not liable because he has deposited. Examine nahi. Interest is to be paid whether or not included in order determining tax liability. Therefore, have to pay interest. Department is valid. Acha, however, interest demanded cannot be in excess of amount specified in notice. Okay. Is cannot demand the interest. Department cannot demand interest in excess of ₹50,000 shown in so cause notice. उसने एक्स्ट्रा, मेरे ख्याल से भी एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए था ना। अगर उसने पे नहीं किया है तो डेज तो बढ़े ही जा रहे हैं ना। बट ओके, जितना ऑर्डर में मेंशन है वही वाला लेना। शो कॉज नोटिस में जो मेंशन है, अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। क्वेश्चन 16। Discuss validity of following independent cases. Valid है कि नहीं? CGST officer issued notice against which appeal was preferred by assessee. Appellate authority concluded that notice issued under 74 was not sustainable, that charges of fraud has not been established. Now officer wishes to determine tax payable. It was issued, okay, valid है, valid if within is show cause notice within of 74 within time limit of show cause notice under section 73. ठीक है। And second, CGST officer adjudication order which did not specify payment of interest. So assessee contents cannot be demanded. Contention say no. Similar to question 59. Interest is to be paid whether or not included in order. Okay, question number 17. Valid as per section 75. Valid if appellate authority concludes that notice is not sustainable for reasons charges of fraud has not been established, and it remaining as if notice was issued under section 73(1). Okay, reasoning थोड़ा सा different है। यहाँ पर reasoning है proper officer can determine tax payable by deeming as if the notice was issued under section 73. Concludes that notice under section 74 is not sustainable.
Incorrect. Interest on is to be paid whether or not same specified in order. Question 17. Messrs. Square and Company received a notice under Section 74(1) of CGST Act demanding tax, interest and penalty on the allegation of suppression of facts. Suppression है यहाँ पर notice for financial year 2021. Okay. Notice 24 नवंबर 2024 को दिया गया सिर्फ 1 है ना 21 हाँ 31 दिसंबर हो गया 5 years से तो है ही अभी टाइम नोटिस इतना appeal denying suppression on which appellate authority concluded notice is not sustainable. Proper officer deemed thus said notice have been issued. Okay, is of the opinion is not liable. 30th November. Due date लेते हैं ना बस 31 दिसंबर आएगा. Square 6 to advise whether the proper officer can proceed to demand under section 73(1) in respect of notice. If yes, fresh demand is valid. Above notice assumed to have been issued on 24th September. Okay, 24th November ना तो अब अगर इधर देखें तो 31st दिसंबर से 31st दिसंबर 2023 तक फिर 30th सितंबर 24 तक होना चाहिए था तो टाइम बार्ड हो गया है टाइम बार्ड वैसा फ्रेश डिमांड इज वैलिड ये तो टाइम बार्ड है इस केस में आफ्टर 30th सितंबर 24 और थर्ड वाले केस में अगर देखें तो वैलिड है बिफोर 30th सितंबर 24 हो जाएगा ठीक है अब इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में टाइम बार्ड नहीं लिखा है सेकेंड में लिखा है यहाँ पर लिखा है फ्रेश डिमांड विल नॉट बी वैलिड इज ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न इज 30th सितंबर 26 ओके और फर्स्ट में लिखा है सीन समझा रहा है द पीओ कैन प्रोसीड टू रीडिटरमाइन द डिमांड इन रेस्पेक्ट ऑफ नोटिस हाँ यहाँ पे जनरली पूछा है कि 74 के नोटिस के रिलेशन 71 कर सकता है क्या तो यहाँ पर concluded that 74(1) is not sustainable and proper officer can redetermine demand deeming as if the notice was issued under section 73(1) deeming ऐसे कर सकता है बट वो टाइम बार्ड होगा नहीं होगा वो अलग चीज़ है ओके क्वेश्चन नंबर 18 Moon Enterprises entitled for exemption from tax under GST law exemption okay it collected tax okay August not deposited August का September 20th September the government are required the consequences of collecting tax but not depositing the same तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट ही होगा शायद है ना एग्जेम्पशन वाला केस है नॉट डिपॉजिटेड तो ये नॉट पेड वाला होना चाहिए आई गेस ओके एग्जेम्पशन है बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट बट नॉट डिपॉजिटेड worth rupees 50,000 okay mandatory to pay amount collected from other person representing tax under GST law to the government. Every person who has collected from any other person any amount as representing tax has not paid same amount to government, irrespective of whether suppliers in respect of which such amount collected are taxable or not. Okay. Amount not so paid may issue so cause notice. Penalty. You are required to pay more than the prices. Okay. For any such amount, may issue so cause notice for recovery of such amount and penalty equivalent to amount specified in notice. After proper officer, after considering representation, if any, made by person on whom so cause is served, determine amount due from such person, and thereupon such person shall pay so cause shall pay the amount. After considering representation, any made by person, determine amount due, and such person shall pay amount so determined along with interest from date on which such amount was collected by him to the date such amount is paid by him to the government. Okay. यहाँ पर है mandatory to pay amount collected from third party to government collected हाँ तो let's
to pay though, irrespective of whether supply is exempt or taxable. ठीक है. If it is mandatory to pay amount collected from other person, every person who has collected tax from any other person, any amount of representing the tax under law. Okay. For any such amount not paid, government can issue cause notice for interest, tax and penalty recovery. The PO, after considering representation, determine amount due and pass order, and person will pay amount plus interest plus पेनाल्टी. यहाँ पर लिखा नहीं है बट आना तो चाहिए. पेनाल्टी का थोड़ी ना. Made by person on broken notice determine amount of from such person and thereupon shall pay amount so determined along with interest. अच्छा मे इशू है. वैसे भी सेक्शन 76 की बात हो गई है तो यहाँ पर पेनाल्टी वैसे भी section 76 amount collected as tax is taxable. Interest shall be paid from next day. Is not taxable from collection date. Okay, अगर collected but not paid, अच्छा अगर transaction taxable थी not paid to due date of payment of tax, otherwise collection date. Order shall be issued within 1 year from the date of issue of so-called notice. I guess इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ही आता है. Before issue of so-called notice, such option is not available. अच्छा हाँ, इस वाले केस में भी नॉट अवेलेबल है. अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स नॉट पेड टू गवर्नमेंट विदिन 30 days फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. ओके, 30 days of non payment of tax. After 30 days, options not available. If after 30 days of due date. Okay. Now important तो लग नहीं रहा है बट ठीक है. Lower main verdict number. Question 19. So Bharti Enterprises collected GST from its customer on behalf of supply. Later discovered supplied goods are exempt. Accountant advised it that amount collected by Bharti Enterprises sending tax was not required to be deposited. As approach you nahi need to be deposited within
30 days from due date of payment of tax. इंटरेस्ट भी लगेगा यहाँ पर प्लस पेनाल्टी collected but not paid to the owner penalty so नहीं लगेगी mandatory to pay amount collected representing tax to the government. Okay, stipulates every person who has collected from any other person representing tax and has not paid to government shall pay the said amount to government whether such supplies taxable or not. Okay, where any amount is required to be paid and which has not been paid, proper officer may serve a notice. Okay, ये question number 18 related है. Question number 18 related should not be paid by him, requiring him to show cause notice why such amount should not be paid by him and by a penalty equivalent to amount specified in the notice should not be imposed. Shall considering representation determine the amount due and therefore such person shall pay tax to amount so determined. Person who has collected any amount is representing tax but not deposited issue to pay in such said amount shall also be liable to pay interest. Interest is payable section 15 from the date such amount was collected 1 year from date of issue of notice in his order shall set out relevant facts and the issue of decision within 1 year tax collected from date amount was collected by him to the date such amount is paid by him to government. I'm not writing this answer, बहुत boring हो रहा है. Okay, question number 20. यहाँ पर I saw one the person. So cause notice and why penalty. That's right. Modes of recovery of tax. Modes of tax. I think तो first तो यही होता है adjustment from dues amount, retaining and selling any goods belonging in selling a recovery through collector of district owns any property or resides as if it's area of land revenue. Land revenue क्या फिर 3 areas can be recovered as an areas of SGST. Okay. After first a deduction of dues from amount owned by tax authorities to such person from other person. Okay, recovery from other person from whom money is due or may become due to such person or who owes money or on account of such person to pay the credit from other person from whom money is due to be
received. Said property is to be sold for sale. Longest until the amount payable is, if dues are not paid within 30 days, the said property is to be sold through collector of this by way of application to appropriate magistrate, who in turn shall proceed to recover the amount as if it was a fine imposed by the appropriate magistrate. Enforcing bond instrument executed under this act. Okay. By enforcing bond or instrument executed. अगर बॉन्ड वगैरह लिया था तो CGST arrears equals to SGST arrears. Okay. Question 21. In month of March, during the course of department audit under 685, Policy Audit team observed that ITC claimed by company is blocked. Audit was of reply. Company submitted a reply containing that was said to the company not blocked, and company submitted a reply that the sector was not blocked and as per ITC claim department was not satisfied. Audit team served a show cause notice under 774, transferred the matter to adjudicating officer and also started recovery process of ITC. You are required to comment whether the amount is justified. The question तो थोड़ा सा टेढ़ा है. Action of department to initiate recovery proceedings without adjustment order being passed. Okay. Last में होगा recovery ना. पहले adjudicate show cause notice सबसे पहले. show cause notice फिर order फिर recovery. Can be initiated if a taxable person fails to pay any amount pursuant to order issued. This law, however, in given case, recovery proceedings only after serving show cause notice, the transferring the matter. The adjudication order has not yet passed in the interesting. Have been initiated only after serving the show cause notice and transferring the matter to ting officer. Only after serving the show cause notice. इसका थोड़ा चीज समझ नहीं आया. Question number 22. 21 दोबारा करना पड़ेगा. Mr. Arians is engaged in supply of taxable goods and is registered in state of Odisha. Demand notice of 5th April good, 10th April, having knowledge. This is the property in his wife's name for consideration without taking any permission. The value of the 80 lakh, oh my god, ये तो मतलब इसी पर्पस से ट्रांसफर हुआ है. Subsequently reply on 15th April that he would not be able to pay due to his distress financial situation. Fact invalid was for inappropriate consideration. Validity of the act of transferring property. Just for tax evasion or no, not good. I got a reply of 15th of April. Where a person amount has become due, creates a charge on or parts of the property belong to him by way of sale, mortgage, exchange in favor of any other person with intention of defrauding. Intention of
intention of defrauding the government revenue. Such charge of tax is pursued in favor of any other person of defrauding the government revenue. Such charge or transfer be void. Now defrauding the government, such charge or transfer shall be void. Such charge or transfer shall not be void. The need for education consideration. If for adequate consideration. Adequate consideration. If for adequate consideration, in good faith and without notice. Without such notice of such sum paid by such person or with the previous permission of peer. Consideration. In good faith or with void if it is not given. Wait or with such transfer shall not be void if it is meant for adequate consideration. Notice or with previous permission. Previous permission. Proper officer. Transfer property will still be considered in the hands of real for the purpose of recovery of dues. Okay, offenses and penalties से पहले I will be doing refunds वाला chapter and demand over हो गया and अभी I am tired a lot. Okay, chapter 15 refund में भी है 20 questions. इसका 1 hour का टारगेट लेके चलना पड़ेगा बिकॉज उसमें पूरा 1.5 hours लग गया चैप्टर डिमांड एंड रिकवरी वाले में. याद है रिकॉल कितना होगा उसके लिए और रिवाइज करना पड़ेगा पर उससे पहले रिफंड चैप्टर एंड मैं करूँगी आफ्टर ब्रेक ऑफ सम टाइम.